Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome back once again on your favorite YouTube channel IPMAT Wallah. IPMAT Wallah, we have specialized in the preparation of IPMAT Indore examination, Rohtak and JIPMAT examination, right? So friends, a very warm welcome to all of you in this next session for IPMAT. So can you all please quickly confirm if I'm clearly visible and audible to every one of you? So let's see if we are live. All right, great. So we are live on the YouTube channel. So friends, a very good evening to all of you. Let's see who all are here. Ruchi, Chinmay, Tamanna, Chetan, everyone, a very good evening to all of you. All right, friends. So friends, let's begin this session. Now, this is not the beginning of clocks because I am sure that all of you must have attended the first lecture of clocks that I have taken in the last week. So last week ने हमने clocks का एक टॉपिक किया था. Clocks में कुछ questions स्टडी किए थे, कुछ concepts स्टडी किए थे. So जल्दी से yes लिख दो chat box में if you remember those concepts that we have covered in the first lecture of clocks that was conducted on last Wednesday. So jaldi se yes likh do. So recently purchased IPMAT Wallah VARC book, did not find sectional and full length mock. All right, Saksham book में sectional और full length mock नहीं है, तो book में concepts होंगे. I'm not sure about VARC books, so I'll be talking to verbal RC faculty. All right, and we'll get back to you. Yes sir, अभी just first lecture देखा. Ruchi, very good यार, very good. And Tanu says all clear. All right, Chinmay says yes. Perfect, great. So some of you, those who were present in the first lecture of clocks, they do remember the concepts that we have taken, right? Okay? And I have told you in the last class that the agenda for the next class will be the questions which are based on defective clocks. तो आज का agenda बहुत simple सा रहेगा. So we'll be talking about, we'll be covering up the concepts of defective clocks. So defective clocks में कुछ terminologies use होती हैं. I'll be telling you those terminologies and will be solving few questions on the basis of defective clocks. ठीक है? चलिए. So let's start with a small round of revision. Revision नहीं बोलूंगा मैं. Let's have a small test on whatever we have covered in the last class with one example. So we have done the questions related to the angles between the hour hand and minute hand, right? So in the last class, we have discussed the speed of minute hand, the speed of hour hand, and then two different types of questions. Number one was for a given time, how we can find out the angle between the hour hand and minute hand. On the other hand, like the reverse of this question, if the angle between hour hand and minute hand is given, then how we can find out the exact time at which a particular angle will be formed. So let's solve this question. The question says that at what time between 2 a.m. and 2:30 a.m. will the two hands of the clock be at right angles to each other? So question number one on your screen, this is just the revision of whatever we have done in the last class, and then we'll begin with the concept of today's class. So tell me what will be the answer of this question. Ruchi says option C. All right, Ruchi, let's see what will happen. Thirty-seven point, 27.27 minutes past 2 a.m. So Ruchi, are you sure that option C is the correct answer for this? Let's have a look at this. Chinmay
on the other hand is has a different opinion. So Chinmay says answer will be option A. All right, so two students, two different answers. I'm waiting for other students if they have any answer for this one. Okay, people, no other answer. So let's have a discussion on this. So we basically studied two different formulas, and I have told you in which scenario which formula to be used. Now here you are given the time slot. The time is between 2 a.m. and 2:30 a.m. So I'll plot, or I'll draw the rough positions of minute hand and hour hand, right? Now I know that the time is between 2 a.m. and 2:30 a.m. So जो आर हैंड होगा, स्पेशली आर हैंड, उसकी पोजीशन इट विल बी समवेयर बिटवीन 2 and 3 o'clock. इनफैक्ट 2 और 3 o'clock का जो एग्जैक्ट सेंटर होगा, मिडिल पॉइंट होगा, उससे पहले ही होगी. सो आर हैंड की पोजीशन विल बी समथिंग लाइक दिस, समवट लाइक दिस. ओके, सो द आर हैंड विल बी बिटवीन 2 and 3 o'clock. डन. Now I want the hour hand and minute hand to be at right angles with each other. Okay, so इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. So if minute hand and hour hand makes an angle of 90 degrees with each other, तो मुझे minute hand की पोजीशन इस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए so that the time is between 2 a.m. and 2:30 p.m. Sorry, 2:30 a.m. So 2 a.m. और 2:30 a.m. के बीच का टाइम होना चाहिए. So that means minute hand 6 से पहले होनी चाहिए. इतना क्लियर है? Minute hand 6 से पहले होनी चाहिए, such that the angle between the hour hand and minute hand will be 90 degrees. So the rough position of minute hand will be something like this, and this angle is 90 degrees between these two hands of the clock. ठीक है? अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फिगर में मिनट हैंड बाद में है, आर हैंड पहले है. ओके, सो फिगर में अगर आर हैंड पहले है तो फॉर्मूले में एच बाद में होना चाहिए. सो आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 11/2m minus 30h. I'll repeat once again. This is one thing that I have covered in the last class कि अगर फिगर में आर हैंड पहले है तो फॉर्मूले में आर हैंड बाद में होना चाहिए, राइट? ठीक है. Now I'll substitute the values and we'll get the value of m. So value किस की पता है? I know the angle between the minute hand and hour hand. It is right angle, that is 90 degrees. I know the value of h also. If the time is between 2 a.m. and 2:30 a.m., then the value of h will be equal to 2. Now based on these two known values, I'll calculate the value of m. ठीक है? m का value find out करते हैं. So theta, which is 90, is equal to 11/2m minus 30 multiplied by 2. The value of h is 2. Now simplifying this, I will get the value of m as m का value कितना आ जाएगा? 90 plus 60 will be 150 multiplied by 2, that is 300 divided by 11. Okay, now like I have explained in the last class very clearly that most of the options will be given in the form of mixed fractions. यहां पे भी अगर आप देखोगे mixed fraction में दिए हुए हैं ये दोनों options. So it will be better if we'll convert this fraction in the form of mixed fraction. So रुचि, जैसे बेटा आपने आंसर दिया है 27.27, that is fine, but options mixed fraction की फॉर्म में है तो मैं यहां पे इस वाले फ्रैक्शन को mixed fraction में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है? एंड दैट विल गिव यू एक्यूरेट आंसर, द आंसर दैट विल मैच विद द ऑप्शंस. हमारा तो एजेंडा यही है ना कि भाई ऑप्शंस जो है वो उनमें से कोई ना कोई आंसर से मैच करना चाहिए. तो बस ऑप्शन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मैं आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकालूंगा, ऑप्शंस अगर डेसिमल्स में है तो आंसर मैं डेसिमल्स में निकालूंगा. सिंपल सी बात है. ठीक है? सो 300 को 11 से डिवाइड कर देते हैं. सो 300 डिवाइडेड बाय 11 इज 22, 8 बचा 7, 3/11. ओके, राइट? सो चिन्मय बेटा आपने ऑप्शन ए दिया है आंसर. ऑप्शन ए
इस आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक आई बिलीव जो आपने किया है। So 27 3/11 minutes after 2 o'clock will be the correct answer of this question. So option C, in my opinion, option C is the correct answer. I hope you have understood, every one of you. So those who are there in this class, come on, quickly give me an acknowledgement. Have you understood, yes or no? All right. So friends, let's take this session ahead and start with a new thing in the same chapter, clocks. So you forced me to doubt my answer. ये क्या हुआ? ये मैसेज किसने लिखा था? यस सर, आई अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन यार, ठीक है, हाँ चलिए। सो कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर concepts in the chapter of clocks. Now we'll be looking at the concept of defective clocks. Okay, now we'll be studying about defective clocks. So while we'll be doing this, we will be studying 4 different terms. Okay, 4 different terms. Term number 1 and term number 2 will be studying together. So term number 1 and 2 are fast clocks and slow clocks. Okay, so let's understand the concept of fast clocks and slow clocks, right? So can you please tell me, anyone, what do we mean by a clock which is fast? So let's say you are given a statement that a clock is fast by 10 minutes. A clock is fast by 10 minutes at 3 p.m. So a clock is fast by 10 minutes at 3 p.m. So what will be the time in your clock? मिस्टर ड्रैगो, मास्टर क्वेस्ट 2.0 और मास्टर क्वेस्ट में एक सिंपल सा डिफरेंस है। मास्टर क्वेस्ट बैच जो था वो पहले स्टार्ट हो गया था, मास्टर क्वेस्ट 2.0 बाद में स्टार्ट हुआ है। दैट्स इट, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, फाइन, ओके, फाइन। नाउ a clock which is fast by 10 minutes at 3 p.m. means that this clock is showing a time which is 10 minutes ahead of the correct time. So at 3 p.m. if the clock is fast by 10 minutes, that means at 3 p.m. the clock is showing a time which is 10 minutes ahead of the given time. So that means at 3 p.m. this clock will show 3:10 p.m. right? Now if no correction is made in this clock, अगर हम time change नहीं करते हैं, right? So at 4 p.m. it will show 4:10 p.m. At 5 p.m. it will show 5:10 p.m. and so on. It will keep on showing this particular time which will be ahead of the correct time by 10 minutes, right? Now similarly, let's talk about slow clock. So if you are given that a clock is slow by 5 minutes, okay, so if a clock is given to be slow by 5 minutes, तो इस चीज का मतलब क्या है? that हमेशा ये करेक्ट टाइम से 5 मिनट पीछे का टाइम शो करेगी, okay, right? So it will always be behind the correct time by 5 minutes. So that means at 3 p.m. it will show 2:55 p.m. At 4 p.m. it will show 3:55 p.m. right? So it will keep on showing the time which is 5 minutes behind the correct time, okay, and so on. So this is the meaning of the clocks which are fast and the clocks which are slow. Ab bhai, point of discussion is
फास्ट क्लॉक्स एंड स्लो क्लॉक्स की अगर बात करें तो आर दीज टाइप ऑफ क्लॉक्स डिफेक्टिव, यस और नो? क्या ये डिफेक्टिव क्लॉक्स में काउंट होंगी? कम ऑन, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. सो टेल मी, will these clocks be defective clocks, yes or no? Let's see, let's see, let's see. Okay, रुचि बोलती है yes. All right, रुचि. Anyone else? तमन्ना, चिन्मय, तनु, what's your opinion? क्या ये जो क्लॉक्स हैं ये डिफेक्टिव क्लॉक्स कहलाएंगी या फिर नहीं? So Mr. Drago says no, Tamanna says no, Chinmay says yes, yes they are defective. Okay, chaliye. So let's talk about this. Now if nothing else is given, okay, so fast clock क्या है? Clock 10 minutes आगे का time show कर रही है. Slow clock is the clock which shows a time which is behind the correct time, right? Now, are these clocks defective? This is what we'll have to interpret from here. Okay? Now, fast clock क्या है? हर बार 3 o'clock पे 3:10 शो कर रही है, 4 o'clock पे 4:10, 5 o'clock पे 5:10 and so on. So, when 1 hour is elapsed in the correct clock, अगर correct time 1 hour से elapse हुआ है, तो हमारी ये जो वॉच है, जो क्लॉक है, जिसको हम फास्ट क्लॉक बोल रहे हैं, जिसको आप लोग, कुछ लोग डिफेक्टिव क्लॉक बोल रहे हैं, तो 1 hour ऑफ करेक्ट टाइम अगर इलैप्स हुआ है तो इस वाली घड़ी में कितने आवर्स इलैप्स हुए हैं? एग्जैक्टली 1 hour. सो 3 से 4 PM और इस वाली घड़ी में 3:10 से 4:10 PM. Then again, for every 1 hour elapsed in the correct clock, I can say that 1 hour is elapsed in this clock. So क्या डिफेक्ट है? कोई डिफेक्ट नहीं है. The problem is मैंने इस क्लॉक को 10 मिनट्स आगे सेट किया है. इस क्लॉक की फंक्शनिंग में, इस क्लॉक की मशीनरी में कोई भी डिफेक्ट नहीं है. फाइन. तो ये गलत टाइम शो कर रही है. गलत टाइम क्यों शो कर रही है? बिकॉज इस क्लॉक में डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट मेरे अंदर है. मैंने 10 मिनट्स आगे का टाइम सेट कर दिया. ऐसा हम कभी कभी करते हैं ना, पहले करते थे कि हम 10 मिनट्स आगे का टाइम सेट करते थे अपनी क्लॉक में ताकि हम जल्दी पहुंच पाए कहीं. ठीक है. बट द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज, इस क्लॉक की फंक्शनिंग में, इस क्लॉक की मशीनरी में कोई डिफेक्ट नहीं है. जब 1 hour करेक्ट टाइम इलैप्स हो रहा है तो इस क्लॉक में भी 1 hour इलैप्स हो रहा है. राइट. सो दैट मींस हमने इंटेंशनली इस क्लॉक को 10 मिनट्स आगे सेट किया है एंड ये हमेशा ही 10 मिनट्स आगे रहेगी. इसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा है. When 1 hour of correct time is elapsed, 1 hour of time is also elapsed in this clock. Fine. So the clocks which are fast are not defective. On the similar way or in the similar manner, the slow clocks are also not defective. They will always show a time which is, so like in this example, this particular clock is showing a time which is always behind the correct time. How many minutes? 5 minutes behind the correct time. So when 1 hour is elapsed, 1 hour is also elapsed in this particular clock. Fine. So the clocks which are fast, the clocks which are slow, they are not defective clocks. It's just that हमने गलत टाइम सेट किया है. इन क्लॉक्स की फंक्शनिंग में, मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सही है. ठीक है. फाइन. चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 2 टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज द क्लॉक which gains time. Fine. So the clock which is gaining time. तो अब स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट इज सेइंग दैट a clock gains time at the rate of 2 minutes every hour. So the clock gains time at a rate of 2 minutes every hour and this clock is set correctly at 3 AM. So मैंने क्या किया है? मैंने एक घड़ी को 3 AM पे करेक्टली सेट कर दिया. बट there is a problem in this clock. This clock is gaining time at a rate of 2 minutes in every hour.
ठीक है, राइट? सो when the correct time is 3 a.m. this clock is correctly set at that time. So ये वाली जो clock है ये कितना time show करेगी? It will also show 3 a.m. right? So when the correct time is 3 a.m. this clock will also show 3 a.m. because this clock is set correctly at 3 a.m. right? Now what is happening with this clock? This clock is gaining at a rate of 2 minutes in every hour. मतलब क्या है इस statement का? For every 1 hour of correct time which is elapsed, in this clock 2 minutes extra will be elapsed. This clock will keep on gaining 2 minutes in every hour. So यहाँ पे अगर 1 hour elapse होगा, that means अगर correct time 4 a.m. है, so can you all tell me what time this defective clock will show? Now this type of clock is a defective clock. तो अब यहां पे ये वाली घड़ी कितना टाइम शो करेगी अगर करेक्ट टाइम 4 am है? Absolutely, Tamanna. Very good. So this clock will show a time which is 4:02 am. ठीक है? So जब करेक्ट टाइम 1 hour से बढ़ा है, in this clock the time elapsed will be 2 minutes extra. That means 1 hour 2 minutes. Okay, fine. आगे चलते हैं. Now this clock will keep on gaining 2 minutes in every 1 hour. So at 5 a.m. what will be the time shown in this clock? 5 बजे इस घड़ी में कितना टाइम होगा? Absolutely, रौनक. Very good. रौनक 5:04 बोलेंगे हम इसे. ठीक है, राइट? ठीक है रौनक. सो 5 am पे यहां पे 1 hour elapse हुआ, राइट? एंड यहां पे इधर दोबारा से 1 hour 2 minutes elapse हो जाएंगे. तो हर बार 2 minutes एक्स्ट्रा elapse होता रहेगा. एंड दिस क्लॉक विल नाउ शो 5:04 am. वंस अगेन एट 6 am ये कितना टाइम शो करेगी? So if the correct time is 6 am, what will be the time shown in this defective clock? Absolutely, it will be 6 am, another 2 minutes gain. At 7 am, it will show 7:08 am and so on. It will keep on happening. तो अब यहाँ पे आप notice कर सकते हो, for every 1 hour elapsed here, 1 hour 2 minutes will be elapsed here, and hence we can say that there is some defect in the functioning of this clock, and this type of clock will be called as defective clock. ठीक है? Done? So this is the clock which is gaining time. Now there may be clocks which will lose time, तो वो 2 minutes पीछे चलती रहेंगी. ठीक है? Right? So I'll come to that, but now let's have a look at the combination of both these things. किस का combination? So combination of whatever we have done on the previous page. So यहाँ पे fast clocks and slow clocks हमने discuss किया था, and here we have discussed the clock which is a defective clock, which is gaining some time. So I'll combine these two things and tell you how the question will be asked. ठीक है? So let's see how the question will be asked, what all things will be given and what all things you will have to find out. Right? Okay. So the question will say that a clock is slow by 10 minutes at 3 am. A clock is slow by 10 minutes at 3 am, right? And this same clock gains 2 minutes per hour. Okay, so the clock gains 2 minutes in every hour. Okay, so now I have combined these two effects. A clock which is slow by 10 minutes at 3 am, and this clock is also gaining 2 minutes in every hour. So let's understand what will happen in this clock at different times.
So the correct time and the time shown by the clock. So people tell me when the correct time is 3 a.m., what will be the time shown in this clock? A clock is slow by 10 minutes at 3 a.m. So if the correct time is 3 a.m., ये वाली घड़ी कितना टाइम शो करेगी? Absolutely correct. Very good. Perfect. So we understand that the clock is slow by 10 minutes at 3 a.m. So that means at 3 a.m. it will show a time which will be 10 minutes behind the correct time. Okay? ठीक है. So it will show 2:50 a.m. Done? All of you quickly tell me at 4 a.m. what will be the time shown by this clock if the clock gaining 2 minutes per hour. हर एक घंटे में 2 मिनट अगर गेन कर रही है, then after 1 hour, that means at 4 a.m. what will be the time shown in this clock? Lovely, wonderful. That's great, good. So anyone else? Chinmay, good. So Tamanna, Ruchi, Chinmay, other students as well. Quickly write your answers. So 1 hour is elapsed here. Since this clock is gaining 2 minutes in every hour, so यहाँ पे 2 minute extra elapse होंगे. That means 1 hour 2 minutes. So the time shown here will be 3:52 a.m. Okay, fine. So at 3 a.m. observe this thing. At 3 a.m. the time gap between the correct time and the time shown by this clock, इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 10 मिनट्स का गैप था. At 4 a.m. this gap is reduced to 8 minutes. तो गैप की अगर मैं बात करता हूं, गैप यहां पे कितना है? 10 मिनट्स का गैप था और यहां पे गैप रिड्यूस हो गया, गैप 8 मिनट्स का रह गया. राइट? सो लाइक दिस द गैप विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. ये जो गैप है इनके बीच में, करेक्ट टाइम और ये जो घड़ी टाइम शो कर रही है, इनके बीच का जो गैप है ये धीरे 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 रिड्यूस होता रहेगा. एंड एक टाइम ऐसा आएगा when this clock will start showing the correct time. So क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, when will this clock show correct time? ये वाली घड़ी करेक्ट टाइम कब शो करेगी? So this is what we'll have to find out. So you can just look at the pattern here. ठीक है, तो या तो ये सारी चीजें लिख लो एक एक करके. 5 AM पे ये कितना शो करेगी? 4:54 AM. Gap is reduced to 6 minutes. Then 6 AM पे it will show 5:56. At 7 AM it will show 6:58. And finally at 8 AM it will show 8 AM. Right? Which is the correct answer given by Ronak. Okay? अब ये सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको जल्दी आंसर निकालना है. So what you can do is observe this particular thing. Now the clock is 10 minutes behind the correct time. 10 मिनट पीछे है. Okay? So if the clock will gain, if the clock gains 10 minutes, अगर क्लॉक 10 मिनट्स गेन कर लेगी तो वो करेक्ट टाइम शो करना शुरू कर देगी. मैं रिपीट करता हूं, एट 3 AM द क्लॉक वाज 10 मिनट्स बिहाइंड द करेक्ट टाइम. ठीक है, 10 मिनट पीछे है. सो 10 मिनट पीछे है, करेक्ट टाइम शो करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 10 मिनट गेन करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ रेट ऑफ गेन इज 2 मिनट्स इन 1 आवर. 1 आवर में ये कितना गेन करती है? 2 मिनट्स. So it gains 2 minutes in every hour. So to gain 10 minutes, इसको कितने hours लगेंगे? अगर 2 मिनट 1 hour में गेन करती है और मुझे इसको 10 मिनट्स गेन कराने हैं, तो कितने hours लगेंगे? 5 hours लगेंगे. So 5 hours after 3 AM should be the correct answer of this question. So 3 AM में 5 hours add कर दो, you will get 8 AM as your answer.
ऑल राइट, आर वी क्लियर अबाउट दिस? येस और नो, जल्दी से लिख दो, येस और नो, आर वी क्लियर अबाउट दिस? येस और नो? परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट। चलिए, so we have understood the concept of the clocks which gains time, the clock which loses time, and the clocks which are fast or slow clocks. ठीक है? So now let's have a look at the questions related to this. So दो तीन questions solve करते हैं। So नैतिक बेटा, आप शुरू से हो क्लास में? Have you started this class at 5 o'clock? अगर आप 5 o'clock से हो ना तो समझ में आ जाना चाहिए। स्टिल अगर समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, राइट? ठीक है, सो रिकॉर्डिंग को एक और बार देखो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? सो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। So watch gains 5 minutes in 1 hour and is set right at 8 a.m. What time will it show at 8 p.m. on the same day? So on the same day 8 p.m. पे वो कितना टाइम शो करेगी? You have 4 options. Quickly select the correct option among these 4 options. All right. So I can see that all of you are giving the same answer. Now rate of gain कितना है? In 1 hour, it gains 5 minutes. ठीक है? 1 hour, it gains 5 minutes. Now this clock is set correctly at 8 a.m. और मुझे ऑब्जर्व करना है at 8 p.m. So 8 a.m. से 8 p.m. how many hours have been elapsed? 12 hours. Okay? So 8 a.m. से 8 p.m. कितने hours elapse हो चुके हैं? 12 hours. राइट? सो मुझे फाइंड आउट करना है कि 1 आवर में अगर 5 मिनट्स गेन करती है तो 12 आवर्स में कितना गेन करेगी। सो 12 आवर्स में टोटल 12 इंटू 5 मिनट्स, दैट इज 60 मिनट्स गेन कर लेगी। 60 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, राइट? सो इन दीज 12 आवर्स this clock will gain 1 hour. Now it was set correctly at 8 a.m. So when the correct time was 8 a.m., this clock was showing 8 a.m. Now after 12 hours, that means at 8 p.m., right? So in these 12 hours, we understand that we have already calculated that this clock will gain 1 hour. So जब 12 hours correct time elapse होगा तो यहां पे 1 hour extra elapse हो जाएगा, ठीक है? सो 8 पीएम की जगह ये 1 आवर अहेड का टाइम शो करेगी एंड इट विल शो द टाइम विच इज 9 पीएम। ओके, सो 9 पीएम विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज another way of asking you the similar type of question. Another way. So watch loses 5 minutes every hour and was set correctly at 6 a.m. on a Monday. So Monday को 6 a.m. पे इसको correctly set कर दिया, ठीक है? Now when will it show the correct time again? Correct time दोबारा से कब show करेगी ये हमें find out करना है।
All right. So first answer is option A. Okay. Ruchi also says option A. Nice. That's it. Only 3 students up till now. What about others? Akshat, your answer. Tamanna, waiting for your answer as well. Come on, 1 more minute. Let's see if you are able to catch the logic here. जो logic required है, अगर वो पकड़ लिया या फिर मैं एक लाइन में अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल पाओगे. Now you have a clock, a wall clock. ठीक है. Now right now the time, let's say for assumption, right now the time is 6 o'clock. ठीक है. 6 AM 6 PM वॉल क्लॉक में तो एक ही चीज है. ठीक है. वॉल क्लॉक में AM PM तो नहीं होता. फाइन. सो लेट्स से द टाइम इज 6 AM या फिर 6 PM. ओके. एंड दिस क्लॉक इज लूजिंग टाइम कॉन्स्टेंटली. फाइन. सो दिस क्लॉक विल लूज टाइम और गेन टाइम, कुछ भी हो सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लॉक. राइट. सो टाइम लूज कर रही है तो टाइम पीछे जाता रहेगा, टाइम गेन कर रही है तो टाइम आगे जाता रहेगा. राइट. सो लेट्स से दिस क्लॉक इज लूजिंग टाइम. सो व्हेन इट विल लूज 1 कंप्लीट आवर, 1 घंटा अगर लूज कर देती है, सो दैट मीन्स इट विल शो द टाइम विच इज 1 आवर बिहाइंड द करेक्ट टाइम. मैं रिपीट कर रहा हूं. द क्लॉक हैज लॉस्ट 1 कंप्लीट आवर. तो 1 कंप्लीट आवर लूज करने के बाद वो करेक्ट टाइम से 1 घंटे पीछे का टाइम शो करेगी. राइट. सिमिलरली व्हेन द क्लॉक हैज लॉस्ट 2 आवर्स, इट विल शो अ टाइम व्हिच इज 2 आवर्स बिहाइंड द करेक्ट टाइम. ऐसा करते करते एक ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन द क्लॉक हैज लॉस्ट अ टोटल ऑफ 12 आवर्स. ठीक है. सो व्हेन द क्लॉक हैज लॉस्ट अ टोटल ऑफ 12 आवर्स, then it will show a time which is 12 hours behind the correct time. अगर अभी टाइम 6 o'clock है and the clock is showing a time which is 12 hours behind the correct time, so 6 o'clock से 12 hours पीछे चले जाओ, it will again be 6 o'clock. right. so एक वॉल क्लॉक में अगर मैं एक वॉल क्लॉक को 12 घंटे पीछे कर देता हूं तो टाइम तो वो सेम शो करेगी. ठीक है. so this is the logic behind this question. Fine. So if I want the clock to show the correct time again, दोबारा से कब correct time show करेगी, right? So you will let this clock either gain or lose a total of 12 hours, right? या तो 12 hour आगे कर दो उसे या फिर 12 hour पीछे कर दो, and this clock will start showing the correct time once again. Okay, so this is the complete logic behind this type of question. Okay, अब question read करते हैं. Now this clock is losing 5 minutes in 1 hour, right? So it is losing, मैंने minus लगा दिया, it is losing 5 minutes in 1 hour. ठीक है. And it is set correctly at 6 AM. 6 AM on Monday इसको correctly set कर दिया. अब मुझे find out करना है कि 6 AM मंडे के बाद ये दोबारा से करेक्ट टाइम कब शो करेगी.
सो अभी हमने देखा है कि करेक्ट टाइम दोबारा से कब शो करेगी, व्हेन इट विल लूज एंटायर 12 आवर्स। तो 5 मिनट लूज करती है 1 आवर में, सो इन हाउ मेनी आवर्स इट विल लूज 12 hours, right? So let's use unitary method. Find 5 minutes it loses in 1 hour. तो 60 minutes lose करने के लिए मैंने क्या किया, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी राइट साइड में भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सो इट विल लूज 60 minutes in a total of 12 hours, right? 60 minutes का मतलब क्या है, 1 hour. So that means it will lose 1 hour in a total of 12 hours. I want to make this clock lose how many hours? 12 hours lose करवाने हैं. So it will lose 12 hours in 12 multiplied 12. That is 144 hours. Right? Now 144 hours को अगर मैं number of days में convert करता हूं, so it will give me 6 days. Right? So to lose 12 hours, this clock will take 6 days and hence exactly 6 days के बाद ये correct time show करना शुरू कर देगी. ओके, सो अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम था मंडे 6 AM, मंडे 6 AM में, मंडे 6 AM में कितने डेज ऐड करने हैं, 6 डेज ऐड कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर. एग्जैक्टली 6 डेज ऐड करने हैं. सो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो संडे 6 AM पे ये क्लॉक दोबारा से करेक्ट टाइम शो करना शुरू कर देगी. सो संडे 6 AM will be the answer of this question. So option A is the correct answer for this. All right, simple, fine. So you just need to catch the concept and logics हमने सारे किए हुए हैं. आपको सिर्फ यहां पे क्या चीज अप्लाई होगी वो देखना है, and using the logic that we have already covered you will be able to solve every question, almost every question in the exam. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. Hi Navodyan. So I believe you have joined in just now. So Navodyan, हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, concepts related to clocks, defective clocks, fast clock, slow clock. Fine. So if you have missed a few things, you will be able to watch the recording of this. Okay. Alright, so Chinmay ने दिया है option A and Ronak says option D. Okay, be careful. Okay, Chinmay, you are changing your answer. No problem. Ruchi says option D. Ronak says option D. Chinmay says option D. And Mr. Drago says option D. Nice. मिस्टर ड्रैगो बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो यार, ठीक है. आई हैव सीन योर आंसर, एक बार में देख लिया है. नो नीड टू लाइक स्पैम दी चैट बॉक्स. आंसर एक बार लिखो. आई हैव सीन दैट. तमन्ना हैज आल्सो सेड आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए फिनिश करते हैं जल्दी से इसे. अ क्लॉक गेन्स 6 minutes in every 1 hour. ओके, इफ इट इज सेट राइट एट द मिडनाइट, 12 मिडनाइट पे इसको करेक्टली सेट किया है, तो 12 मिडनाइट अगर करेक्ट टाइम है, सो दिस क्लॉक विल ऑल्सो शो 12 मिडनाइट.
ठीक है. Then what will be the time it will show at noon the following morning? मतलब 12 noon पे ये कितना टाइम शो करेगी if it is losing time. ठीक है, फाइन. सो रौनक, यू आर सेइंग मिसिंग मी इन LRDI क्लासेस. यार मैं ले तो रहा हूं आपकी क्लासेस, ठीक है, फाइन. So if it is set right at midnight, what time it will show at noon the following day? The following day noon पे ये कितना टाइम शो करेगी? आप लोगों को ऑप्शन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? So everybody is saying answer is option D, but just tell me a clock gains 6 minutes in every hour. सब कुछ ठीक है? ऑप्शन डी पक्का है आंसर? चलो चेक करते हैं. अब क्लॉक गेन कर रही है 6 मिनट्स इन एवरी 1 आवर. टाइम कितना इलैप्स हुआ है? 12 आवर्स. सो 12 आवर्स में कितना गेन करेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है. 12 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 72 मिनट्स. सो इट विल शो अ टाइम विच इज ahead of the correct time. Ahead क्यों? Because this clock is gaining time. So this clock will show a time which is ahead of the correct time by 72 minutes. तो 12 noon में 72 minutes ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. ऑप्शन ए क्यों था आंसर? नहीं, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो 172 minutes is equal to 1 hour 12 minutes. So 12 noon में मैं 1 hour 12 minutes ऐड कर दूंगा. So the time that this clock will show should be 1:12 p.m. Okay, fine. ठीक है. So that's it. This is all about this question. So answer is option D, that is 1:12 p.m. Correct? Okay. So friends, this was the last question of the day. Alright, so funny videos मैं चैनल पे ही तो, YouTube चैनल पे ही तो क्लासेस ले रहा हूं. So I'll be taking your classes. Do not worry at all. I have not gone anywhere. I'll be there and I'll be taking your classes. ठीक है? So friends, this is all about clocks. अब आने वाली 2 क्लासेस जो है, नेक्स्ट क्लासेस इन दिस बैच, एस्पायर बैच, उन पे डिस्कशन करते हैं 2 मिनट का. So आने वाली क्लासेस में हम करने वाले हैं कैलेंडर्स. So once again I have divided calendars in 2 different classes. Okay, so what you all have to do is, on the basis of whatever you have learned in today's class, just practice some more questions of clocks. So we have covered each and every type of question or each and every type of concept that will be used to solve questions in clocks. So friends, that's all from my side for today. I'll see you in the next class on next Wednesday at the same time with the next topic, that is calendars, right? So let's have a look at the next class in the next week. Till then, have a wonderful time. I'll see you again. Good day. Bye-bye.